I've been seeing these videos, on WhatsApp all the time. It has been circulating like anything कि लोगों को कोविड हो रहा है तो उन्हें जोर जोर से मार रहे हैं, मतलब ठोक रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. They are doing that. How does that help with oxygen, like increasing the oxygen? I mean, this is a question I think a lot of people must be thinking that it is right or something, since it's a myth busting session. So I would really like to ask this question to you, because I have been getting this video since a long time, and a lot of people are forwarding me कि किसी को भी problem होता है तो you do this technique and this will help. So yeah, please tell us about it. Yeah, it's like again, I am myself is seeing lot of videos circulating, and like I would like to say these are very raw videos. मतलब उसका बहुत ही क्रूर तरीका है वो करने का जो वीडियोस में सर्कुलेट हो रहा है. So we it like in our chest physiotherapy we call it cupping therapy. So in this what we do, like we make a cup like this with our hands and we just tap on the patient chest or on the back wherever required. But again it's not कि जैसे videos में दिखा रहे हैं कि बस ठोक रहे हैं और कहीं भी ठोक रहे हैं. Yeah, it's not tapping at all. Yeah, it's like the word you use is like literally ठोक रहे हैं. So ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी. So just consult with your doctor पहले कि whether it is really required also or not, and depending on the chest x-rays or depending on the CT scan we see कि secretions जो हैं वो कहाँ deposit हो गए हैं, क्योंकि हमारी lungs में there are many dead spaces. जहां तक हम normal breathing में जब हम कर रहे हैं या coughing कर रहे हैं या steam कर रहे हैं तो वहां तक हमारा इफेक्ट नहीं पहुंचता है, वो जिसको हम डेड स्पेसेस कहते हैं. तो उसके लिए कपिंग थेरेपी जरूरत होती है कि जो सीक्रेशंस वहां जाके डिपॉजिट हो गए हैं, जो कफ वहां जाके डिपॉजिट हो गया है, तो उसको बाहर निकालना है. तो उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस पोजीशन में पेशेंट को लेटाना है. इट्स नॉट कि आप सीधा लेट गए या पेट पे लेट गए. डिपेंड्स अगेन कि आपके कौन से पार्ट ऑफ द लंग में आपकी सीक्रेशंस ज्यादा डिपॉजिट है. सो लाइक यू हैव टू कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट आफ्टर गेटिंग अ चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन that how we have to do, in which position we have to lie, or in which position our patient has to lie down. दूसरा it's very important again कि किस जगह आपको करना है, पोजिशनिंग हो गई, एंड देन कि किस जगह आपको टैपिंग करनी है, कपिंग करनी है. सो एंड इट हैज टू बी जस्ट नॉट दैट कि पेशेंट फील अनकंफर्टेबल. समटाइम्स अगर आप ये ज्यादा जोर की कपिंग कर देंगे या ज्यादा जोर की ऐसे ये ठोकने वाली एक्सरसाइज करेंगे पेशेंट के ऊपर, तो इवन रिप्स फ्रैक्चर तक हो जाती है. सो इट कैन बी रियली स्केरी. एंड कई बार अगर आप बस जनरल वे में अगर आप कपिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, सो क्या होगा कि सीक्रेशंस एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाएंगे या कहीं और ब्लॉक हो जाएंगे. सो आई विल सजेस्ट कि जस्ट वीडियोस देख के ऐसे करना नहीं शुरू करें. जस्ट अगर करना भी है तो जस्ट कंसल्ट विद द फिजियोथेरेपिस्ट, उससे सीख लें कि कैसे करना है आपको, एंड देन डू इट, not randomly just after watching the videos. It's really risky. Absolutely. So I think everybody knows about it, and now the myth has been busted. So again, thank you, Dr. Neha, for that. And if you have any queries, or if you have seen any WhatsApp video like that, you can mention in the comment section so that again Dr. Neha can help you with. And if you want to consult her, you can always do that. You can connect on the number which is already mentioned in the screen.